Hello and welcome to the Financial Jungle. My name is Vignesh Bevada. You are watching Infants. We are on a mission to creating a financial revolution where we are going to tell you everything about the Indian stock market. So let's move to video. Before starting this video, if you didn't subscribe our channel, so go and subscribe our channel and hit the bell icon because upcoming videos में बहुत सारी चीज़ हम लेके आ रहे तो सारे videos आपको miss ना हो. So let's move to video. Now let's understand what is fundamental analysis. ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस को हम समझेंगे एंड उसके जो जो स्टेप्स होंगे वो समझेंगे हम इस वीडियो में. सो हिट द लाइक बटन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस. थिंक अबाउट एनी स्टॉक इज अ पीस ऑफ दैट कंपनी एंड फंडामेंटल एनालिसिस इज लाइक अ डी इनटू दैट कंपनीज डीएनए, लाइक अंडरस्टैंडिंग its financial health, growth and potential, etc. And it's also about like choosing and asking the right question to that company, like is that company profitable? If yes, how much money it's make? Is that growing company? If yes, then its sales and earnings are increasing day by day. Does the company have a strong balance sheet to handle the future debts? It's that well maintained company by the team? If yes, does the leadership have a track record of that success? By answering this question, we build a proper company image is intrinsic value. Like this helps to decide whether the company is undervalued or overvalued. So this is the good for investment first step. ठीक है? Now let's jump to the steps of fundamental analysis. So the step number 1 is basically choosing the right target. Don't jump to the any random stock or a company. Think about and identify the company you are interested or you know the company's product or the service for the better investments and also the ideas of that company. Like अगर आपको पता है कंपनी सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करती है एंड क्या क्या है उसमें एंड अबाउट ऑल्सो द प्रोडक्ट क्या सेल करती है, आने वाले टाइम में उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा इन द मार्केट, वो बताना आपके लिए और इजी हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज चूजिंग योर राइट टारगेट. नाउ लेट्स जंप टू द स्टेप 2. Step 2 is basically financial statement. ठीक है, financial statement is like a annual report of that company. In this report, we can also measure first is income statement. Income statement is show the revenue of the company is generated, how much and it's spent. ठीक है. Next is the balance sheet. Balance sheet basically understand its assets and the liability and the debts level of that company. Third is basically cash flow. Cash flow is basically track how the company manage its cash and make investments. Step 3 is basically ratio, the number game. In this we have 3 parameters. First is a PE ratio. PE ratio is basically stand for price to earning ratio. It compares the stock price and its earning per share, giving an idea of the valuation of the company. ठीक है. Second is basically debt to equity ratio. Debt to equity ratio is measure how much the debt of the company has compared to its own money. Now let's jump to the third is basically ROI is basically return on equity. Return on equity, it shows the efficiency of that company shareholder use their money and generating a good profit for that company. Now let's jump to the step number 4 which is very important. It's a compare. If अगर आपको लगता है कि you go in IT sector stocks, if you think कि IT sector will be a boom in the future market, so IT sector में बहुत सारे stocks है, so you should compare the stocks. Like अगर आपके पास 3 या 4 stock का option है, compare the सारे stocks like balance sheet, income statement, PE ratio, debt to equity ratio and everything. After then select the company, okay, or we can say stock. Now let's jump to the step number 5. Step number 5 it's look beyond the numbers. It's not only about the number game, it's about you need to understand the industrial trends. Like कौन सी इंडस्ट्री का ट्रेंड अपकमिंग में आएगा, like
मार्केट का अभी मोमेंटम क्यों इतना हाई पे, इफ़ यू थिंक आने वाले टाइम में इंडिया में ईवी सेक्टर्स अच्छे चलेंगे, सो यू नीड टू फिगर आउट कौन सा ईवी सेक्टर चलेगा, एंड ईवी सेक्टर अगर चलेगा तो उसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें और साथ में चलेगी। लाइक इन ईवी में वी कैन से लाइक बैटरीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें हो गई, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेंड ऑल्सो, ठीक है। लास्ट इज अ बेसिकली कॉम्पिटिटिव, आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिशन्स कैसे चल रहे हैं। लाइक अगर आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, इफ़ यू हैव अ कॉम्पिटिटर, सो वो कंपनी आपसे बेटर परफॉर्म अगर करती है, एंड व्हाट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग, वी कैन से स्ट्रॉन्ग आंसर टू वेल परफॉर्मिंग दैट कंपनी। लाइक आपकी कंपनी और अच्छा परफॉर्म कैसे करेगी एंड compete कैसे करेगी वो कंपनी से, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, वी आर गिविंग अ वन स्मॉल बोनस टिप फॉर यू। अगर आपको सारे ये लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, पीई रेशियो एंड एक्सेट्रा, अगर आपको सारा डेटा एक ही प्लेस पे चाहिए, सो यू कैन चेक आउट द मनी कंट्रोल वेबसाइट। इज बेसिकली लीगल वेबसाइट बाय सेबी ओनली। मनी कंट्रोल पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा रिलेटेड टू एनी स्टॉक का, लाइक बैलेंस शीट, प्रीवियस बैलेंस शीट, करंट स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स ऑन दैट, ठीक है। सो सारा डेटा एक ही प्लेस पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो अबाउट ईच एंड एवरी स्टॉक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। बाय सिलेक्टिंग एनी स्टॉक, जस्ट चेक दिस ऑल पैरामीटर्स इन दैट स्टॉक, उसके बाद ही स्टॉक सिलेक्ट करें। आई होप you understand the whole video. Thank you so much for watching our video. I hope you like the video and please subscribe our channel and hit the bell icon because upcoming videos में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले, and stay tuned and stay connected in this financial revolution. Thank you so much, infants.